point was types of DNA. Probably this is something new for you. या आप अगर types of DNA के हवाले से बात करें, you may think about the circular DNA, you may think about linear DNA, you may think about plasmid DNA and other types of DNA. लेकिन हम उस कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे, हम जो हेलिकल स्ट्रक्चर की कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको भी नहीं आ रही? वेट अ सेकंड, लेट मी चेक। अगर यहाँ से कोई इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, मैं फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। जी मेरे एंड से जो है इट इज़ क्लियर, मेरे एंड से क्लियर है। मैं और कोशिश करता हूँ कि माइक के पास होके बात कर लूँ, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अभी ठीक है जी? अभी ठीक है? जी सर, अब ठीक है। ओके। सो जो टाइप्स ऑफ डीएनए है वो हम बात कर रहे हैं उसकी हेलिकल कॉइलिंग के हवाले से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ हेलिकल कॉइलिंग। एक को हम बी डीएनए कहते हैं, एक को हम ए डीएनए कहते हैं और एक को हम जो है वो जी डीएनए कहते हैं। और द डिफरेंस इज बी डीएनए इज नॉर्मल डीएनए, इट इज़ नॉर्मल डबल हेलिक्स राइट हैंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये जो नॉर्मल सेल्स पे नॉर्मल डीएनए पाया जाता है उसको बी डीएनए कहा जाता है। अगर आप इस बी डीएनए को ट्रीट करें अल्कोहल के साथ, लेट्स से एथनॉल के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, तो इथाइल अल्कोहल के साथ आपको आइडिया है कि जब भी आप अल्कोहल यूज़ करते हैं तो डिहाइड्रेशन होती है। दिस डीएनए विल गेट डिहाइड्रेटेड, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड इट विल श्रिंक, then it will be called as ADNA. So ADNA is again right-handed coiled, fairly similar with the bDNA, but it will be the dehydrated DNA. इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी पिक्चर पे आऊँगा तो बात करूँगा। Then there is ZDNA or zDNA. This is left-handed double helical structure. This is not normal. This occurs somewhere, some parts of the DNA. और zDNA या left-handed helix की जो वजह है, that is the alternative purines और pyrimidines, especially G और C contents. आप इसको इस पिक्चर में से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेच है डीएनए का, उसमें एक स्ट्रैंड के ऊपर जी सी जो है रिपीट हो रहे हैं, अल्टरनेट कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। अकॉर्डिंगली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से दे विल अल्टरनेट ऑन द other strand GC and GC. Ultimately that particular segment of DNA is going to get the left-handed coiled structure and that will be referred as zDNA, and this is not normal. It is going to disturb the नॉर्मल हेलिकल बैकबोन शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अगर आप इस पिक्चर को देखें, दिस इज BDNA और इसके बड़े फाइन किस्म के हेलिकल शुगर फॉस्फेट बैकबोन यहाँ पे आपको विजिबल है। इसको अगर आप डिहाइड्रेट कर देंगे देन द helical structure will remain same. The difference will be it will shrink in size. इसका जो है लेंथ कम हो गई है। On the other hand zDNA में अगर आप देखें तो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन जो है that appears in a zigzag fashion. B और A DNA में जब हम कंपैरिजन करते हैं उनके फोल्डिंग पैटर्न पे, then we need to understand about the size of major groups and minor groups. हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि मेजर ग्रुप का क्या फंक्शन है और माइनर ग्रुप का क्या फंक्शन है और इम्पोर्टेंस क्या है इनकी। यहाँ पे अगर देखें 3.6 नैनोमीटर मेजर ग्रुप है, दिस इज BDNA, and when it gets dehydrated major group almost gets disappeared or it shrinks so much that we cannot approach the DNA for any regulatory purpose. It can be replication or it can be transcription. इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ADNA जब बन जाता है डिहाइड्रेटेड ADNA, उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, रेप्लिकेशन इंटरफेयर हो जाती है और ट्रांसक्रिप्शन इंटरफेयर हो जाती है। जी एनी क्वेश्चन? ओके,
So this is the last slide. The difference between A and B DNA is only dehydration, just for your information, and difference in the size of the major and minor grooves. If you have सर any ये question, you ए can डीएनए ask. सर ये एक्सक्यूज मी सर कि ए डीएनए जी टोटल जी बताएं. ये बी डीएनए टोटली डिहाइड्रेटेड होके ए डीएनए बनता है कि थोड़ा बहुत वाटर होता है ए में भी. देखिए, जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी 100% डिहाइड्रेटेड. आप अगर डिहाइड्रेशन स्टार्ट हुई है और इसमें किसी सेगमेंट में से वाटर कंटेंट निकल गया है, बाकी लेट्स सपोज half of the molecule is dehydrated, rest half is still not dehydrated, so then there will be difference. Okay, 100% dehydration means there is no water. When there is no water, then the molecules, they are not going to survive. Okay, यस so this was the सर ये जो मेजर topic 2. जी जो मेजर ग्रुप है जी जी. माइनर ग्रुप है इनके बारे में एकदम फिर बता दें इनका पर्पस. मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप की डिटेल आएगी. मेजर ग्रुप बेसिकली जो है, दे आर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स और पार्ट ऑफ द डीएनए. जब भी हमने रेप्लिकेशन की बात करनी, आज हम बात करेंगे वहाँ पे आप देखेंगे. यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे जब नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स के बाद. तो जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स ने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अप्रोच करना होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके टेम्पलेट स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड बनाना होता है, तो उसके लिए जो पॉइंट ऑफ एंट्री है, दैट इज बेसिकली मेजर ग्रूव. प्रोटीन्स दे कम एंड दे अप्रोच द डीएनए फ्रॉम मेजर ग्रूव्स. ओके, सो दिस वाज आवर टॉपिक 2. सो कीप इन माइंड वन थिंग, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं. टॉपिक का नंबर डिफरेंट होगा, लेक्चर का नंबर डिफरेंट हो सकता है. अब जैसे ये एक लेक्चर जो है, एक टॉपिक जो है, वो अगर एक लेक्चर में कवर नहीं हुआ, then we are supposed to complete it in the next lecture. So that is the reason I changed the nomenclature from lecture number 1, lecture number 2 to topic number 1 and topic number 2. And now we move to topic number 3. Okay जी. सो आई सपोज कि आप लोगों को जो बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक बातें हैं डीएनए के हवाले से, मैं काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर चुका हूँ. आज हम जो है वो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन का. रेप्लिकेशन एज अ प्रोसेस के हवाले से, बिकॉज देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशंस. वन इज़ इन प्रोकैरियोट्स, द सेकंड वन इज़ इन यूकैरियोट्स. ये आप गालिबन पहले पढ़ के आए होंगे, बट वी हैव टू गो in detail, in little bit detail in this particular topic. Definition की बात हमने की थी, that making the identical copies of a DNA molecule is called as replication, and for that purpose we use the template strand from the parental strand, that is the single strand of the DNA. Then what actually we need for a replication? We need certain enzymes which are called as polymerases. We need the DNA template, the single stranded DNA. अब चूँकि DNA double stranded होता है, then each strand is going to act as a template strand. एक strand को हम जो है वो leading strand कहेंगे, this one. एक को हम lagging strand कहेंगे, this one. Then we need प्राइमर्स. आपने पढ़ा होगा दैट प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूँगा, दैट वी डोंट एक्चुअली नीड प्राइमर्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. we need free 3' hydroxyl group which is provided by the primer, because if you have a primer but 3' hydroxyl group is not present, आप उसको वहाँ से रिमूव कर दें या मॉडिफाई कर दें, then replication is not going to be possible. So we modify this thing, that primer is required, but instead of saying primer, we say 3' hydroxyl group of the primer is required, which is provided by the RNA. Why I am calling it here is 3' hydroxyl group. जब हम आगे जाके जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको इसका बेस्ट आंसर मिलेगा. Why I am asking you to read it as 3' hydroxyl group. देन बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत है, जिनको हम DNTPs भी कहते हैं. और अगर चारों टाइप्स की बात करें, DATP, DGTP, DCTP और DTTP की ज़रूरत होती है. एंड द लास्ट पॉइंट, सिंथेसिस इज़ ऑलवेज फ्रॉम 5 to 3'. एंड जब हम सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड. सो सिंथेसिस इज़ ऑलवेज फ्रॉम
5 प्राइम टूवर्ड्स 3 प्राइम एंड, जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करेगा एंजाइम 3 प्राइम एंड से टूवर्ड्स 5 prime end of the template strand. So keep in mind, newly synthesized strand is daughter strand, which is going to be synthesized in 5 to 3 direction. So here, this picture, this part on the right side, it is the template. This one is the primer, and you can see here what actually we need only from the primer is hydroxyl group to make the phosphodiester bond with the next coming nucleotide. अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो इंटरप्ट मी इन बिटवीन. अब हम दो डिफरेंट सेगमेंट्स में बात करेंगे. पहले एंजाइम्स की बात करेंगे, देन प्रोटीन्स की बात करेंगे, और उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करते हुए हम प्रोसेस की बात करेंगे. प्रोकैरियोट्स में जब इनिशियली एंजाइम्स डिस्कवरी हुई तो इट वाज बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन एंजाइम, जिसको पॉलीमरेज 1 का नाम दिया गया. बट फर्दर सब्सिक्वेंट स्टडीज हैव शोन दैट देयर इज़ not single enzyme, many different types of enzymes are present, and the major enzyme for replication is DNA polymerase 3, जिसको pol 3 का नाम दिया जाता है. This is major replication enzyme. Polymerase 1 is referred as repair enzyme. It has the ability to polymerize the nucleotides. It has the ability to remove the nucleotides. कैसे, अभी आगे चल के बात होती है. Then there is a third polymerase which is named as polymerase 2. Its function is still under debate. No defined function is associated to the polymerase 2. Some people say that it is a reserved polymerase which supports the polymerase 3 if polymerase 3 becomes non-functional for some reason, but still evidence has to come. जब हम रेशो की बात करते हैं, मतलब हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमरेज 1 आर प्रेजेंट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमरेज 3 आर प्रेजेंट. पॉलीमरेज 1 के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सेल में मौजूद होते हैं, अराउंड 300 to 400 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, whereas there are only 10 copies of polymerase 3. That was the reason at the beginning जब डिस्कवरी की गई थी तो चूँकि polymerase 1 के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, it was easy to find them. So it was believed that this is the major replication enzyme. But later on it was observed that there exists another enzyme in minor quantities, that is polymerase 3, and polymerase 3 is major replication enzyme. If we look at the structure of the replication enzyme, you need to understand this structure carefully because जब इसको understand करेंगे तो आपको सारे process का जो है वो idea हो जाएगा. I'll come to this picture later on. पहले मैं components के हवाले से बात कर लूँ enzyme की. Enzyme है जो polymerase 3, this is a part of larger structure which is known as replication machine, और इसको हम replisome भी कहते हैं. और enzyme जो है that is a multi-protein complex, therefore we call it as holoenzyme. इसमें 3 distinct regions को हम identify कर सकते हैं, और अगर हम इसके individual subunits की बात करें तो polymerase 3 has at least 10 different subunits performing different functions. इनमें से कुछ जो subunits हैं, they are meant to attach the polymerase with the DNA, और कुछ subunits जो हैं वो catalytic activity perform करते हैं. If we look now at this picture, this is the enzyme जिसको मैंने encircle किया है. If you see this ball like structure, इसको core enzyme label किया हुआ core polymerase, और इसके आगे एक ring shape structure है जिसको beta clamp कहा गया है. There are present 2 core polymerase subunits because there are 2 strands. Replication जब होगी तो दोनों strands की इकट्ठी होगी, so we will need 2 polymerase subunits. We have 2 polymerase subunits. Associated with these 2 polymerase subunits, there are going to be 2 beta clamps. Beta clamps are mandatory because they help in keeping these core polymerase elements attached with the template strand. Then we have the gamma clamp loader. The gamma clamp loader is basically responsible for loading these beta clamp and this core enzyme to the DNA strand, and that you can see over here. And this yellow color ring shape structure is beta clamp. अब इसकी जो gamma clamp loader की हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है, इसकी ज़रूरत पेश आएगी लीडिंग स्ट्रैंड पे सिर्फ एक दफ़ा और लैगिंग स्ट्रैंड पे मल्टीपल टाइम ज़रूरत पेश आएगी. रीज़न वी विल सी इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स.
फिर अब अगर हम आ जाएं कोर एंजाइम के ऊपर, बिकॉज कोर एंजाइम इज़ अ फंक्शनल एंजाइम, इट हैज़ थ्री कंपोनेंट्स जिनको हम अल्फ़ा, एप्सिलॉन और थीटा के नाम से जो है वो लेबल करते हैं. नाउ इफ़ यू थिंक अबाउट polymerization, this core enzyme or core polymer is going to polymerize the nucleotides. Number one function is polymerization. और पॉलीमराइजेशन के फ़ौरन बाद प्रूफ रीड भी करना है कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं आ गया, ए के ने जो टी को कॉम्प्लीमेंट करना था, जी ने सी को कॉम्प्लीमेंट करना था और अदर वे राउंड. सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम इज़ द प्रूफ रीडिंग. और अगर कोई एरर होता है कि नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो है न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो जाता है, फ़ौरन से पहले जो है वहाँ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और एरर को रिमूव किया जाता है. सो दिस इज़ द सेकेंड फंक्शन द कोर एंजाइम इज़ गोइंग टू परफॉर्म. एंड द थर्ड फंक्शन, इफ़ देर इज़ एन एरर, तो वो जो रिपेयर करना होती है या रिमूव करके जो रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना होता है, उसके लिए एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चाहिए होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, दैट इज़ एट्रीब्यूटेड टू द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम. सो तीन कंपोनेंट हैं कोर एंजाइम के. अल्फा सब यूनिट मेंट फॉर पॉलीमराइजेशन, epsilon subunit is meant for proofreading, and theta subunit is meant for exonuclease activity. If we look at this picture, this is a complete uh, enzyme, DNA polymerase 3, which is meant to replicate the two parental strand. If you look here, you can see alpha polymerase, alpha polymerase, beta clamp, beta clamp, theta and epsilon subunit, theta and epsilon subunit. Then here we have the gamma clamp and sigma clamps and other some factors which are making up this particular structure or enzyme. Out of these three structures, you can simply see beta clamp is responsible for attachment of polymerase with the template strand. These three subunits, they make up the core polymerase, and the gamma complex is responsible for linking the beta clamp with the template strand and performing the function of replication bidirectionally. कैसे, वो आगे चल के अभी बात आएगी. यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलें. देन आई विल प्रोसीड फर्दर. एंजाइम के हवाले से हमने बात कर ली. नाउ एट द रेप्लिकेशन फोर्क व्हाट वी नीड, और इसको हम नाम दे देते हैं मशीनरी वर्किंग एट द replication fork. So this is the point of replication. Helicase protein required होती है that opens up these two strands of the parental DNA molecule. अब unwinding के लिए हमें हेलिकेज प्रोटीन की ज़रूरत होती है. अब मैं हेलिकेज की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ हेलिकेजेस. 12 different helicases are found in bacterial cells, and every helicase is meant to perform the unwinding function, but at what time, where, which helicase is going to function is going to be something different. So the first step during replication is to separate the two strands of the DNA so that template strand, single strand can be made available. That function is performed by helicase, and for that separation it needs energy. That energy comes from ATP, hydrolysis of the ATP. अब जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया है और आपके पास हेलिकेज जो है वो परमानेंटली एसोसिएट हो गई है विद डीएनए मॉलिक्यूल, इट कीप्स ऑन मूविंग फर्दर so that the double stranded DNA keeps on unwinding. In the meantime, another set of proteins, you can see here the green in color, they come and they bind themselves with the single stranded DNA. Now these are called as single strand binding proteins. As the name indicates, they have to perform two functions. Number one, they keep the two DNA strands unwound, इनको जो है दोबारा rewind करने से रोकती है. Number two, these single stranded protein protect
the DNA strand from the nuclease enzymes activity, because cytoplasm में जो है nucleases मौजूद होते हैं, and nucleases are those enzymes which can target the single stranded nucleic acid. So as long as the DNA is double stranded, it cannot be targeted by those nucleases, but as soon as you convert these double stranded DNA into single stranded DNA by opening up, then they can become target of these nucleases. So to protect from the nucleases, these green colored single strand binding protein, they play their role. Somebody wants to ask something. Okay, the next function, when what is happening at the replication fork, the next thing is synthesis of primer, and for that purpose we have another enzyme which is called as primase. Primase is responsible for preparation or synthesis of the primer that binds with the complementary sequence, and then the polymerase comes and starts adding up the nucleotides until the segment is completely replicated. Then there is present another enzyme which will come to perform its function of ligation. This is required for the Okazaki fragment connectivity. टोपोइसोमरेज के हवाले से हम कल अच्छी खासी डिटेल में बात कर चुके दैट दीज आर द एंजाइम्स व्हिच आर रिस्पांसिबल टू रिलैक्स द डीएनए, एंड दे आर of two types, topoisomerase 1 and topoisomerase 2. अभी पहली स्लाइड पे हमने बात की थी रेप्लिकेशन जो है दैट the synthesis of new strand is from 5 to 3 direction. Now look at this picture. 5 to 3 direction is possible, keeping in mind कि जो double stranded DNA है that will be anti-parallel in orientation. So replication fork is growing in this direction. This strand, it gets the template opened up and it gets extended, template open up and it continues extending. On the other hand, the second strand is a bit different because यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डिसकॉन्टिन्यूटी की, बिकॉज यहाँ पे हमें 5 to 3 की अगर सिंथेसिस करनी है then we have to synthesize the DNA strand of that particular segment which is unwound. In the meantime next segment unwound होगा तो फिर ये वाला segment replicate होगा. In the meantime next unwound होगा segment तो ये segment replicate होगा, और हम कह सकते हैं discontinuous synthesis of DNA strand. And you might have studied about leading strand and lagging strands, and these fragmented DNA molecules which are replicated on lagging strand, they are called as Okazaki fragments. They later on are linked together. Okazaki was the person who for the first time described or identified these fragments of the DNA, and their length was reported 1000 to 2000 nucleotide at the beginning. For each Okazaki fragment synthesis, we need a new primer. Now, if you look at this picture, लीडिंग स्ट्रैंड को इनिशिएट करने के लिए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही दफ़ा प्राइमर की ज़रूरत थी. लैगिंग स्ट्रैंड में हर कुछ लेंथ के बाद आफ्टर एवरी few base pairs 2000 nucleotides we need to add a new primer. So that is the reason we need this primase enzyme on the lagging strand again and again. So that primase will keep on working until the DNA replication is completed 100%. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. सर फिर लैगेज की एक्टिविटी सिर्फ लैगिंग स्ट्रैंड पर होगी ना? जी लैगिंग स्ट्रैंड पे होगी अनलेस अनटिल हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लेकिन मैं प्रोकैरियोट्स की जब बात करूँगा टुवर्ड्स द एंड बात करेंगे ये लीडिंग और लैगिंग दोनों के ऊपर फंक्शन करेगा. कैसे वो आगे चल के मैं बताऊँगा. ओके जी. सो these were the proteins required, and these were two different types of template strands. These were two enzymes or proteins required for replication activity. Now if you look at this picture, this is the onset of replication. Replication initiate होगी और उसके बाद elongate होगी. And if you remember,
हमने पायरोफॉस्फेट के हवाले से बात की थी वेरी फर्स्ट लेक्चर में, और मैंने आपको बताया था जब भी पॉलीमराइजेशन होती है पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज बॉन्ड बनेगा. So you can see here phosphodiesterase bond has only one phosphate. This is another phosphodiesterase bond, and here you can see 3' hydroxyl group is going to attack on the alpha phosphate of the ATP, and beta and gamma phosphate, they are free, they are released as pyrophosphate. That we already discussed about leading and lagging strand. Now if you look at this picture gives you whole story of the replication right from the beginning up to the completion. Let me see if I magnify certain parts. No, magnification is not possible. Okay, so we start from let's say this particular point. Not this particular point, यहाँ से हम start करते हैं. And replication fork is moving in this direction. This is polymerase 3. This is beta clamp. This is second polymerase 3. This is beta clamp. And this flower shaped structure is the helicase. It keeps on moving further. And if you look at this particular strand, this is the leading strand, and you can see continuous synthesis is keeps on going. Red color का जो ये strand है, this is the daughter strand. इस साइड पे आ जाइए, they label it as RNA primer 1. यहाँ से primer extend हुआ up till this particular point. In the meantime, this to this part, it gets single stranded. There we get the second primer attached, and that particular primer is being extended to some extent until this gap is filled, that we can see in this picture. So this was the primer number 1, this was the primer number 2, and you can see the gap is filled, and the gap is filled here. In the meantime, next part is denatured or separated, and we get the primer number 3 over here. And now this particular extension will keep on going unless until this part is going to be replicated, that we can see somewhere here that primer 3 gets extended. Now what is going to happen if you look at the polymerase 3 associated with the lagging strand? Once it completes this particular space, it is free. यहाँ पे अगर आप इसकी पोजीशन देखें, it is reading the single stranded DNA, and here it is free, it is no more reading the DNA strand. यहाँ पे इसके DNA strand आपको visible नहीं है. Rather it gets off from the DNA, it moves to the next primer over here, and then it starts replicating again. In this way things keeps on moving. Why we have this loop like structure over here? आपको याद है हमने बात की थी replication is bidirectional. अगर bidirectional की बात है, that means at the same time replication is going to happen in both the directions because of anti-parallel orientation. लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रेप्लिसोम की, देयर इज ओनली वन रेप्लिसोम जिसमें 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं, 2 पॉलीमरेज 3 हैं, एंड सो ऑन मल्टीपल कॉम्प्लेक्स. It can only move either in right direction or in left direction. So how it is possible कि एक डायरेक्शन में मूव करते हुए दोनों स्ट्रैंड्स को रेप्लिकेट किया जा सके while replicating both the strands in opposite direction? This is possible only when we make a loop like conformation over here. I hope you can understand कि ये इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो 5 to 3 है. अगर इसको हम लूप बना दें जैसे कि यहाँ पे लूप बना है, अब डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इज सेम फ्रॉम 5 to 3 in opposite direction, but the replisome is moving in one and the same direction. So once replication is completed, then
देयर कम्स अनदर प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए मुझे एक डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। सो आई एम ओनली गोइंग टू ड्रॉ द लैगिंग स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड, ओके। सो ये वेवी पोर्शन जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज़ बेसिकली प्राइमर, एंड जो लीनियर पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज़ बेसिकली DNA strand. So this primer from here up to this point, this primer is RNA by nature and it has to be removed. It is removed by the action of polymerase 1. अभी हमने सिर्फ polymerase 3 की बात की थी, अब हम polymerase 1 की बात करते हैं जिसका नाम हमने रखा था repair enzyme. Now it has two types of activities. एक इसकी activity है, it will remove the primer from here, from 5' end. जैसे जैसे ये प्राइमर को रिमूव करता जाएगा यहाँ पे स्पेस बनती जाएगी, और उस स्पेस को फिल करने के लिए देन इट इज़ गोइंग टू ऐड न्यूक्लियोटाइड्स on the preceding DNA strand, preceding Okazaki fragment, so that this gap can be filled up. So polymerase 1 has two functions. Number one, it removes the nucleotides. Number two, it adds the nucleotides. Now यहाँ पे अगर आप देखें, जब आपने एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात की, आपने किसी प्राइमर की बात नहीं की. You added the nucleotides at 3' end of the Okazaki fragment, और 3' end के ऊपर DNA में हमने पहले ही बात की हुई है, we have one hydroxyl group. So that was the reason I used a term that for polymerization of nucleotides we need free hydroxyl group that is provided by the primer when you have to initiate the replication. और जब आपने repair की बात करनी है तो this hydroxyl group is provided by 3' end of the pre-existing DNA strand which can be named as Okazaki fragment. So in this way we have polymerase 1 in action and polymerase 3 in action. अब एक और टेक्निकल सा क्वेश्चन है. So this is 5' end. Now this is leading strand, this is 3' end. यहाँ पे टेम्पलेट में A है, यहाँ पे G आ गया, which is not complementary base pairing. Now polymerase 3 is in action here. Polymerase 3 is working over here. हमने बात की polymerase 3 polymerizes, then it proofreads and then it corrects the error. This proofreading needs to be removed. So इस G को remove किया जाएगा. For that purpose polymerase 3 will stop here. It will go back और G को यहाँ से remove करेगा. Now look at the direction of action 3' end to 5' end. Polymerase 3 is removing the nucleotide at the 3' end of the DNA strand. On the other hand, जो हमने polymerase 1 की बात की है is removing the nucleotide at the 5' end of the DNA strand. अभी मैं एक पिक्चर और दिखाता हूँ, वहाँ से और पिक्चर क्लियर हो गया आपको. This one. So here this X is a wrong nucleotide and that is going to be removed. और यहाँ पे जो है, sorry, this is going to be removed from, yes, this is 5' end. This is primer, this is 5' end. ये भी remove होगा, ये भी remove होगा, ये भी remove होगा, and we keep on moving. यहाँ से जाके हम primer ख़त्म होता है. So we are moving from 5 to 3' end. So this exonuclease activity is 5 to 3. On the other hand, इस साइड के ऊपर आ जाइए, यहाँ पे T नहीं आना था, यहाँ G आना था. So we are removing this particular nucleotide from 3' towards 5' end. So this is 3 to 5 exonuclease activity. एक और पॉइंट देखने वाला ये है, जब 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है उससे वो न्यूक्लियोटाइड रिमूव होता है जिसने अभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया, जबकि जब 5 to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है
यहाँ से वो न्यूक्लियोटाइड रिमूव होते हैं जिन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप कर लिए हुए हैं. So this is the difference between the functionality of polymerase 1 and 3. This Sir? is about तो सर क्या जो ये one by प्राइमर one. होता है Let आरएनए, me close. Let me close my सर जो आरएनए word. उसके प्राइमर, बाद मैं आपके questions लेता हूँ. So the polymerase 3 major enzyme, 8 polymerases, it edits, it proofreads. It has exonuclease activity that removes non-hydrogen bond bases. Polymerase 1, the repair enzyme, polymerization activity, proofreading activity, exonuclease activity. It has both 3 to 5 and 5 to 3 exonuclease activity. It can remove those nucleotides which has developed the hydrogen bond. It can remove those nucleotides which has not yet developed the hydrogen bonds. So this is about the replication in prokaryotes. Now you can ask the questions.